Good afternoon, everyone. Hope everyone is doing good. My name is Ankit. I'm from Tally Solution. I based out at Delhi. I have been with Tally Solution since 7 years, and I work as a GTM and Evangelization Manager for Tally. I welcome everyone to this free webinar session, and most of you would be knowing that we conduct this session on every Wednesday for our chartered accountant community, and we discuss various topics, including GST domain compliance and TallyPrime features. And so today we are also going to take a few wonderful features in TallyPrime. And I'm just setting the context. We have our speaker, CA Mohit Garg. I will invite him. Before that, I'm just setting the context. What are the topics we are going to cover in today's session? Basically, as all of you would be aware that TallyPrime has been there in the market since 2 years, and this product has many unique features for our influencer community. Influencer community, if I talk about our chartered accountant, our tax advocate, our industry experts, it has many unique features for them. We have designed this product through various by a lot of research in that sense, and this product altogether evolved by your feedback, your suggestion, and there are many unique features are there that is very unique in that sense. So TallyPrime, currently we have 2.1, the latest release. In this, we have digital signature is there, audit trial is there. And if you talk about TallyPrime altogether, that for the chartered accountant, Save View is a unique kind of features. What we used to do in Tally ERP is basically that whatever report we used to generate, जो भी हम रिपोर्ट जनरेट करते थे, एंड दैट उस रिपोर्ट से बाहर आने के बाद, आई मीन द मोमेंट वी go out of that report, it used to go to the default screen basically. So we used to generate multiple report multiple times, and the same thing we do for the multiple companies. As you handle multiple customers data, so in that sense you used to do a lot of repetition kind of work. So in TallyPrime, you no need to do that kind of repetition things. If let's say you are going to a trial balance and you want an opening balance and closing balance, just configure that from the F12, and after that you just put a button called Save View. Then you can keep that report for forever. So whenever you want, you can just go to that report, Save View, and click on that report. You will find that report. You will not need to generate that report again and again. So I'm just highlighting the few things so that you can remember and explore it in TallyPrime. And also we have also simplified the top menu. And the top menu you can find many things like company data, print, and export, import, go to. We have simplified everything so that you no need to search, and no need to go to you no need to wonder where these features are inside. And single sign-in is a very unique features for chartered accountants. Single sign-in, what does it mean? Means single sign-in means, so in single sign-in what you can do is, let's say you have 100 companies data, and there is you put a login ID and password. So if you enable single sign-in, let's say I'm just opening a company, putting a login ID and password just AA, and the second company onward it has the same login credential. So Tally will not ask for the login credential if you enable single sign-in. So you can save time. Then digital signature, definitely that is a very useful thing today that we have in 2.1 release. Then e-invoicing and eBay bill. E-invoicing, the way e-invoicing slab is getting reduced day by day. I think from 1st of October, 10 crore businesses now
they are generating e-invoicing, and further it seems the slab will get reduced. So now e-invoicing report is one of the critical things that you can get into it and evaluate whether the company is doing the right thing or not, how many e-invoicing get generated, how many pending invoices is there, or how many e-invoicing got cancelled for various regions, and how many got modified. All those things is required. I mean, so that comprehensive report is there for you. The same goes for the eBay bill also. So, and apart from that, the return filing process completely, the simplified return filing process is there in TallyPrime. So in ERP, we do a lot of thing in offline portal. So that thing we have kept today to explain how you can simplify the GST return in TallyPrime. So to cover this entire thing, I have Mohit Garg with me. And just in his brief introduction, CA Mohit Garg is a practicing chartered accountant. He's our evangelist speaker for Tally, for Tally, and he has been associated with Tally as an evangelist since more than 2 years now, and he has already been taken multiple sessions in these topics, GST and TallyPrime features, e-invoicing. A lot of session he has already been taken, and in his education he has done LLB, MBA, Finance and HR, and IFRS, and CCAB, and he has also done CF AFD certificate on GST, and he has been into practice more than 10 years. And also apart from that practice, he also run a training institute for taxation and Tally also. So he has vast kind of experience into this domain, and I personally learn a lot from him from the domain side. So we are a technology company. So whenever I guess I need to clarify anything, I just reach out to Mohit, and I would appreciate for the today's session. He in his schedule, he has very tight kind of schedule in his working. So thank you, Mohit, for taking out time to take us through with this session, and I'm just handovering this session to you, Mohit. प्लीज हमें पूरा डिटेल में बताइए कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हम कैसे टैली प्राइम के थ्रू इजीली कर पाएंगे, and what are the important things that a chartered accountant as a consultant, what are the important things we can manage easily through TallyPrime in that sense, and जो ऑफलाइन टूल में बेसिकली टाइम लग जाता है मैनुअली सब चीजें करने में, एंड टैली ERP9 से बेसिकली टैली ERP9 जो है हमारा वहाँ पे डायरेक्ट जेसन नहीं बनता है, जो टैक्स परसेंटेज वाइज जो है आइटम वाइज है वो दैट इज आल्सो नॉट देयर, उसको हम एनुअल कंप्यूटेशंस के से जाके निकालते हैं जी, एंड उसको फिर जो जेसन फाइल बनाते हैं फिर ऑफलाइन टूल में सेक्शन वाइज उसको करके ऑफलाइन पोर्टल से जनरेट करते हैं जेसन, फिर ऑफलाइन पोर्टल में लेके जाते हैं, इनकेस कुछ HSN GSTN में भी प्रॉब्लम होता है फिर उसको डाउनलोड करके चेक करते हैं. सो जो हमारे आर्टिकल्स हैं ऑफिस में जो है मल्टीपल कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, रिटर्न प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका एफिशिएंसी और इंक्रीज हो सकता है अगर टैली प्राइम यूज करें. सो आई वुड रिक्वेस्ट सर प्लीज जो है पूरा सेशन को डिटेल में बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा समझाइए, and I'm just handing to you, sir. Over to you. Please take it. Thank you, Ankit. First of all, I would like to thank Tally Evangelist and the CA Correct program for taking me a chance, giving me a chance for interacting with you all. First, now, before starting the session, जो मैं सेशन स्टार्ट करूं तो उसमें मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि why we need Tally for preparation of GSTR returns. And I am not taking here the all technical returns, but I am taking here the returns which we are required to file on regular basis. So high lashes.
Mohit, please try to now try to contribute English and English though Oh, as much as you possible oh, possible, oh. because there are people who have joined from I, different. I will try to manage, Yeah. but as far as I am from the UP side, Yes, so yes, that थोड़ा सा accent तो रहेगा. no issue for the accent side. So जी, just जी. go ahead and Uh, try to mix English and English both. Yeah. हाँ, I will try to manage. I will conclude my session in English and Hindi both. इंग्लिश में रखेंगे, जहाँ Oh, पे लगेगा थोड़ा सा टफ लग रहा है तो उसे हम yeah, मैनेज करेंगे. sure, absolutely. First of all, I am starting with the types of the returns which are required to be filed by us on a regular basis, which we have already known. We are having, first of all, my Excel sheet open करने को. First of all, I will start with the returns, parts of the returns, which are required to be filed by us on the regular basis, on monthly basis, maybe in monthly basis or maybe on quarterly basis, depends upon the turnover. So that first of all, we have to file GSTR1 for the sales, and another return is GSTR2, जो हमें फाइल नहीं करना, बट इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकंसाइल्ड, जिसे हमें रिकंसाइल करना होगा विद द पार्ट ऑफ द आईटीसी. एंड अनदर रिटर्न इज GSTR3B, and I will discuss here all these three returns, including GSTR2 reconciliation also. So first of all, I am going to starting with the GSTR1, that is a returns for the sales only. It is returns for the sales only, and which is required to be filed on the due dates, which is 11th of next month. Is there any query from participant side? मैं चले जाऊंगा. Okay. मैं चले Now, जाऊंगा. ठीक है. now I am going to starting with the sales return. The sales return, we are required to file this return in the 11 columns. We have the 11 columns in that return, and I am going to show you the types, the returns screen, the return screen which is shown in the portal. At the portal, you will find these type of the screen, and which is totally correlated with the tally. Tally ने भी बिल्कुल same screen अपने वहां पे फॉलो करी. जो स्क्रीन, जो नंबर, जो सेक्शंस that the mention on this site, this is the view of the site of GSTR1. GSTR1 में जो हमारे को columns fill करने हैं, that is these are the 11 columns, 1 2, these are total tabs are 11 tabs, and we have to file the returns in details into these tabs. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग विद कि कौन कौन से टैब्स में मेरे को क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टैब इज फॉर B2B सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू फाइल B2B सेल्स, मींस द रजिस्टर्ड सेल्स ओनली. B2B सेल्स. next tab is for B2C sales. B2C sales, ये that we call registered to registered. ऐसी सेल जो हमने रजिस्टर्ड व्यापारी से करी और रजिस्टर्ड डीलर को हमने सेल करी, तो वो हमारे को B2B सेल्स में फाइल करना होगा. देन इज B2C. B2C इज फॉर हम रजिस्टर्ड है और हम किसको सेल कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हो. जो हमने अनरजिस्टर्ड को माल बेचा है, that sales will be come into that tab. The 5A tab is for unregistered sale, which the invoice value is 2.5 lakh above. If we are having the invoice value for 2.5 and above, then we are required to file the details into the B2C column. Then is the export invoices. If we are having export sales, if we are having other than SEZ sales, then we are required to fill into the B2B.
field. But if we are having export sales means outside India अगर हम कोई माल बेच रहे हैं तो we have to file in the column in the 6A. Then is B2C. Again we are finding 5A में भी B2C sales था और 7 column में भी B2C sales है. So that in that column we have to file only the unregistered sale, जो हमारी unregistered sale है less than 2.5, because we have filed 2.5 lakh से below sales मेरे को 2.5 लाख की अबव सेल्स जो होगी हमारी वो हमारा B2C लार्ज में जानी है और B2C अदर्स में जो हमारी सेल्स जानी है वो हमारी सेल्स जाएगी 2.5 लाख से बिलो जितनी सेल्स है वो हमारी इस कॉलम में आएगी. नेक्स्ट इज नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड सेल्स. अगर मेरा कोई एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है और मैं उसको डील करता हूँ क्योंकि these all are fields for taxable sales, and next is nil rated, exempted and zero rated sales, so that we have to file there only. Next is for credit note and debit note. These credit notes and debit notes are related to the B2B sales. जो हमारे B2B sales से related invoices हैं उसकी सेल उसका सेल्स रिटर्न पर जो भी हमारा हो रहा है जो हमको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट्स हमारे को जो मेंशन करने होंगे दैट इज कम इन द 9B कॉलम. अगर आप देखना चाहें ये मेरा शायद आपको व्यू हो रहा होगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों को. देन इज 9B. 9B इज फॉर अनरजिस्टर्ड. अनरजिस्टर्ड मींस B2CL लार्ज वाले जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हमारे को कहाँ पे फाइल करने होंगे 9B के अंदर. द टैब इज 9B. Next is tax on advance. In the GST, we have to also pay taxes on the advance also. If we are having, if we are taking the advance from the party or any customer for the supply of the goods or any services. Now the tax liability for payment of GST is applicable on the एडवांस रिसीव फॉर द पेमेंट ऑफ सर्विसेज. अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए आपने कोई एडवांस लिया हुआ है तो आपको टैक्स हैंड टू हैंड उसी समय जमा करना है. आपको बिल के लिए वेट नहीं करना कि बिलिंग होगी तब मैं टैक्स जमा करूंगा. सो दैट वी हैव टू पे टैक्सेस ऑन एडवांस ऑल्सो. अगर कोई एडवांस लिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल if I go to a chartered accountant for supply for a services like for a audit of business and we have paid for example the complete जो contract है वो that is for 1 lakh, but if we paid 40,000 for that, the chartered accountant is required to pay GST on that 40,000 also, because but ultimately the services are not fully completed, but he is required to pay GST on that part also. If he is received the advance, then he has to pay taxes on that. Then the adjustment of advance. When the services are finally provided, then the chartered accountant will issue the bill for ₹1 lakh. Then the 40,000 GST which has already been paid by that chartered accountant, that will also be deducted. तो वो एडजस्टमेंट होगा. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में अभी अंकित जी ने भी बताया, द HSN समरी पार्ट which has been incorporated in the TallyPrime also, कि हमें प्रोडक्ट वाइज आइटम वाइज हमको समरी देना है कि कितना सेल किस HSN कोड का हमने किया है, तो HSN वाइज समरी हमको देना होगा. Now it has become mandatory for all. Earlier it is only the recommendatory, not mandatory from the department side. Now it has become mandatory कि आपको HSN summary fill करनी होगी. Next is document issued, the final and last column. It is document issued. Which type of the document? Like if you have issued the sales invoice, then you have to mention the number of the documents that you have issued
in that month. For example, if you have issued from bill number 115 to 151, then you have to mention all the bill numbers we have issued from bill number 115 to 1151, 151 जैसा भी होगा हमारा इनवॉइस नंबर, तो हमको मेंशन करना होगा if we have cancelled any invoice from them. For example, I have the bill series from 115 and I have issued total 151 series तक के invoices मैं issue कर चुका हूँ. So that I have issued 36 invoices, 37 invoices in that month. So I have to mention कि मैंने अपनी बिल बुक की सीरीज का 115 बिल बुक से 1151 तक इशू किया है. टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस 37 है. एंड द if any invoices get cancelled or any for any other reason कि वो कुछ correction हुआ या कोई और changes हुए, then we have to mention over here कि 4 are cancelled over there. Then we have net issued invoice 33. तो हमारे को ये पूरी डिटेल किस कॉलम में फिल करके देनी होगी डिपार्टमेंट को? द डॉक्यूमेंट इशू कॉलम. HSN अब मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने अभी आपको सारे कॉलम्स के बारे में बताया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 11. देन B2B sales are will come into the this column. B2C sales is there. Export sales is there. B2C other means the small customer which are unregistered, जिनका invoice value 2.5 लाख से कम है, it will come into this. The exempted, nil rated and zero rated sales will be there. The credit notes and debit notes of B2B customers will come into the 9B column. ये जो debit and credit note for registered dealer. Again the 9B column for unregistered dealer which are B2CL. अब one question is arise over here कि if we are having the customer who has purchased the goods from us and having the invoice value less than 2.5 lakh, where it will go? अगर मेरे कस्टमर का इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम है और यहाँ पे मेरा B2B आ गया, यहाँ पे मेरा B2C 2.5 लाख अबव आ गया, तो लेस देन 2.5 लाख जो भी है उसकी डिटेल कहाँ जाएगी? दैट विल कम अंडर द कॉलम नंबर 7, जहां पे हम डिटेल्स को नेट शो करेंगे, ना कि ग्रॉस अमाउंट शो करेंगे. एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको. फॉर एग्जांपल, आई हैव सोल्ड टोटल 1,50,000 गुड्स टू अनरजिस्टर्ड and I have get return from the customer is 20,000. Net sales will be 1,30,000. Then I will mention into the B2C column only 1,30,000, not the 1,50,000. हमारे को वहां पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट की डिटेल अलग से देने की जरूरत नहीं है यदि वो कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और जिसकी इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से बिलो. तो first of all, I have explained all about the GST R1. Now I am coming to the part at TallyPrime. Now I am moving for a TallyPrime. I am sharing the screen for Tally. I am showing you some demo data with you, and I am going to first of all मैंने आपको जो 11 कॉलम बताए वो 11 कॉलम आपको मैं यहाँ पे पहले टैली में दिखा देते हैं. आफ्टरवर्ड्स आई एम टेलिंग यू कि what are the details will come into the tally. Tally will generate these all returns GSTR1, GSTR2 and GSTR3 from their own side. I am going to the first of all GSTR1 part. GSTR1, then इसके बाद में मैंने जैसे ही GSTR1 पे क्लिक किया तो देखिएगा
आई एम गोइंग टू हियर, देखिए मैंने आपको टोटल बताया 11 कॉलम, 9 कॉलम्स आर हियर, B2B, B2C, B2CS, credit note, debit note registered, credit note, debit note unregistered, export invoices, tax on advance, adjustment for advance, nil rated, zero rated and exempted, HSN summary and document summary. Total, these all are the 11 columns, which has also been shown by us in the Excel also. जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें मैंने आपको दिखाया। आफ्टरवर्ड्स अब नाउ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम GSTR1 बनाने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR1। सिंपली हमारे को यहाँ पे अवेलेबल है कि हम यहाँ से डायरेक्टली GSTR1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को एक एक कॉलम के बारे में पता चल गया। नाउ हमें नीड क्या थी कि हम GSTR1 टैली के थ्रू ही बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, नंबर ऑफ इनवॉइसेस अगर हम देखें एक नॉर्मल बिजनेस में 300 to 400 इनवॉइसेस मिनिमम से मिनिमम रहते हैं। अगर मैं अपने एक टैली डेटा की बात करूं तो ओनली सितंबर में इस पार्टी में मेरे पास में 375 इनवॉइसेस B2B में, जो कि मेरे को एक एक डिटेल्स कस्टमर को डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होगी। तो 375 इनवॉइसेस की डिटेल्स को फिल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास में एक अगर इफ आई एम फाइलिंग द रिटर्न थ्रू द पोर्टल ओनली, आई हैव टू पंच द इनवॉइस ऑन द 375 टाइम्स टू द पोर्टल। बट if I want to file the return from the tally, अगर मेरा इनवॉइस टैली से क्रिएटेड है तो इसको बड़ी इजीली मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, फाइल कर सकता हूँ। देखिएगा एक सेकेंड, इसको फाइल करने के लिए हमारे पास में टैली पे देखिए ये हमारा डेटा है। सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि कोई ट्रांजेक्शन जहाँ पे कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं। तो हम देखिए टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हमारे 768, included in the return 555, 555 and not relevant for return 213 इनवॉइसेस ऐसे हैं, वाउचर्स ऐसे हैं जिनको हमने रिटर्न में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। एंड फाइनली देयर इज एन कोई करेक्शन नीडेड है, क्योंकि हमारे इस टैली डेटा में कोई करेक्शन नीडेड नहीं है, कोई करेक्शन नहीं करना, सो दैट अगर कोई एरर है तो टैली यहीं पे मेरे को आइडेंटिफाई करके भी दे रहा है। तो मेरा ये टाइम बच रहा है। अगेन जैसे कि अभी अंकित जी ने बताया कि yes, Mohit ji, let's say there are 10 line item which सर 11 लाइन comes, आइटम, 11 लाइन आइटम। no, I'm just taking one example. Let's say जी there are transaction which has some error basically. यस सर। So sorry, I got mute. So let's say there are transactions, but it has some error. It means it will come to the uncertain transactions, and I can easily identify and get to know ki what exactly the correction to be needed, so that I can easily go into it. Let's say there are 20 or 30 or 50, whatever it is. It will show me Yes. what are the error actually, whether the GSTN are not there or normally tax rate is not there. So like this only you want to explain. So can we see one transaction if you can just put some error, and will it come to the uncertain transaction and yes sir, how what amount of time it will basically will take to rectify those errors? So generally what happens, sample invoice, एक invoice लेकर करते हैं और I got into many customer and when they see कि uncertain transaction जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है, and कुछ लोग जो है accept एजिटीज भी कर लेते हैं, कुछ यूजर जो है वो कहते हैं मेरी गलती शो हो रहा है यहाँ पे, मैं लेकिन एज पर द रिटर्न दे आर नॉट करेक्ट। सो उसको हमें बहुत तरीके से देख के उसको सही करना चाहिए। सर एक रीजन बताऊं, एक एरर छोटी सी करूंगा और हो सकता है कि जो 375 इनवॉइस है ये सारे करेक्शन नीडेड में आ जाए।
Okay. अगर मैं छोटा सा एक स्टेट में भी एक वो करता हूँ, Yes. चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेल द इंटर स्टेट सेल और जीएसटी लगाया हुआ है IGST, बट इफ आई सेल टू दी सिंपली, अगर मैंने यूपी टू यूपी ट्रांजेक्शन है, मतलब विद इन यूपी ट्रांजेक्शन है, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का इनवॉइस अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में शो करूंगा और सभी इनवॉइसेस में सेम मिस्टेक हो रखी है, तो हो सकता है ये 375 सारे इनवॉइसेस में एरर शो करे, एरर शो हो जाए। यस। बिल्कुल शो करेगा। Okay. एक एक करेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने एक पार्टी जो आपने खोल रखी है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल है रेजर पे या शिप रॉकेट ले लेते हैं, शिप रॉकेट ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेरी पार्टी खुली है रेजर पे IGST सेल, और मैंने इसमें कुछ जैसे स्टेट खुली हुई है कर्नाटका, एक छोटी सी एरर होगी और हो सकता है कि इसके इस इशू के चक्कर में पूरे इनवॉइसेस मेरे कहाँ पे आ जाएं, एरर शो करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको उत्तर प्रदेश कर, ठीक है, कर्नाटका से मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश कर दिया, Okay. नाउ इट विल स्टार्ट शोइंग। शायद मैंने इनवॉइस पूरा चेंज नहीं किया, केवल एक कभी नहीं हो सकता, मैंने शायद इनवॉइस में चेंज नहीं किया, यस, ट्रांजैक्शन को आपने सेव नहीं किया। ट्रांजेक्शन को सेव नहीं हम्म। ठीक है। एरर तो वैसे अभी टैली ने अभी हैंड टू हैंड भी शो करी थी, और देखिए जैसे ही एक एरर मैंने एक इनवॉइस में डाली तो मेरे सामने इसने शो करा, देखिए ऊपर आ। So can I make this statement मोहित जी यस कि सर, मतलब गलती से भी गलती ना होने का चांसेस यहाँ पे नहीं है। होने का चांसेस है कि वॉट आप एवर। कोई एरर कर यस। रहे हैं। जी जी। अगर यूजर लेवल पे कोई भी मिस्टेक हो रहा है, सो टैली प्राइम कैन इंश्योर दैट दैट मिस्टेक विल नॉट go to GST return filing without taking without making the correction, है ना? Without making that. So If I will enter on that part, if yes, it will show mismatch due to the tax amount modified in the voucher, yes, because it is a intra-state supply, so yes. that we should select the CGST and SGST over here. And But Mohit, we have can selected the can IGST. you just show the correction, how we can take the correction? Can able to correct it? Yes sir. Yes. Yeah, we have to only enter on that transaction only, Yes. and it will be like that कि आपका जो कैलकुलेशन है, देखिए यहाँ पे इन्होंने CGST एंड SGST शो कर दिया, ऑटो कैलकुलेटेड टैक्स दिया हुआ है। Yes. ये टैली का कैलकुलेशन है कि 217.370 होना चाहिए, एंड द डिफरेंस इज देयर। तो आप यहाँ पे 217.30 एंड 217.30 यहाँ मेंशन करें और एक्सेप्ट कर दें, then the transaction will get automatically One error, what their name of the duty ledger was not identified, not applicable tha. I think we need to. और क्या बोले, एक second. Mismatch due to tax rate. Voucher number is serial number CGS. Output CGST. Output SGST. As per transaction. So 17.30.
देन ओवर, ये हमारी जो डिफरेंस था वो पूरा हो गया और ये एरर भी बन, इधर हमारी एरर भी। थैंक यू मोजी। तो yes so ये we can say that this is a मतलब this is a triangulation report। एक triangulation report है जहाँ पे comprehensive reports मिल रहा है as a consultant। अगर आपको आपके पास डेटा आ रहा है and you are simply just you are looking this data means in a first glance मेरा जो पहला top section है जहाँ पे included returns है, then included complete information HSN summary, correction needed, not relevant, and uncertain transaction is the most critical thing I should look into it in the first hand। And after going to that, अगर ये मेरा zero पे है, then I can rest assured that my data is correct। I can take this data to I can go directly to prepare the JSON and take that JSON file to the online portal। Yes, fantastic Mohit। Yes, please proceed। next time going to prepare, मतलब अब उसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटी बचती नहीं। Now we have if we are having the uncertain transaction and correction needed is 0, it means the all the file is all the data for that month. We are preparing the returns for the month of September 1st for September 2020, so that it is totally correct. I can prepare the return in the many ways, like export कर सकता हूँ इसको ई रिटर्न फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ई रिटर्न मैंने फॉर्मेट पर क्लिक करा, then it will show CSV format, Excel and JSON। CSV की तो हमें नीड नहीं आती, एक्सेल में हम यूज कर सकते हैं इफ वी आर यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। इफ अगर हम डिपार्टमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज करते हैं तो हम एक्सेल में डेटा ले सकते हैं, जिससे हम गो थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज JSON, इट इज द जावा फाइल जो कि डेटा इंटरचेंज के लिए यूज करी जाती है, डायरेक्टली पोर्टल पे इंपोर्ट हो जाए और हमारा टाइम जो रिटर्न बनाने में और रिटर्न प्रिपेयर करने में अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इनवॉइसेस की काउंटिंग देखें तो 555 मतलब 555 इनवॉइसेस हैं जिनको हमको फीड करने में पोर्टल में काफी समय लगता। बट बाय द हेल्प ऑफ द JSON फाइल वी कैन गेट द रिटर्न फाइल विद इन अ फ्यू सेकेंड्स का काम है। ओनली द वी आर रिक्वायर्ड टू OTP from the client side and the return will be get file। Now I am showing that the JSON file and JSON file को हमें किस पाथ पर हमें डाउनलोड करना है, यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया और आफ्टरवर्ड्स हम इसको पोर्टल पर इजीली फाइल भी कर सकते हैं। मैं पोर्टल पे आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। But I am showing the portal also, how we can file the return on the JSON file on that portal also। We can go to the return side because I have filed the GSTR1 already, so that it will not show this। will go to the prepare online offline returns। ऑनलाइन में हमारे को जो डेटा था वो 1 by 1 फीड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास में 555 इनवॉइसेस हैं तो हमें 1 by 1 फीड करने पड़ेंगे। सिंपली GST नंबर और पार्टी का नेम और कितना अमाउंट था उस इनवॉइस का, वो सारी डिटेल 1 by 1 फिल करनी। बिकॉज इट विल टेक मच टाइम फॉर फ्रॉम आवर साइड, सो वी कैन फाइल द रिटर्न इन द ऑफलाइन मोड। इस ऑफलाइन मोड में हम कैसे करेंगे, जस्ट ओनली वी हैव टू अपलोड द JSON फाइल ओवर हियर एंड द रिटर्न विल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर बाय द टैली। देखिएगा इनवॉइस अपलोड ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है चूज फाइल। वी हैव टू फाइल JSON फाइल, सेलेक्ट करना है हमारे को JSON फाइल को एंड देन अपलोड कर देना एंड इट विल ऑटोमेटिकली शो इन आवर पोर्टल। तो विद इन अ फ्यू सेकेंड ये फाइल हमारे को क्या होगा, टैली पे शो करने लगे, हमारी पोर्टल पे शो करने लगेगी और हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर मैं आपको शो करूं Q2 का डेटा विच हैज ऑलरेडी बीन ऑटो पॉपुलेटेड बाय अस इन द GSTR1, ये मैं फाइल कर चुका हूँ ऑलरेडी और
मैं आपको दिखा भी सकता हूँ तो JSON फाइल है. I have filed the data from JSON only. There is a 375 returns which is the here, and you can also go to here. 360 invoices. These all are the invoices which have been uploaded by the JSON file to the portal. I have not filed that return manually one by one entry नहीं डाली है. Only the tally data is directly get uploaded to the portal. जो हमारा सितंबर का रिटर्न फाइल है इसमें 360 इनवॉइसेज हैं जो कि ये डायरेक्टली मैंने टैली से ही बना के इसी में फिल करें. I am not using any offline utility of the department. I have not used any third party software for that. Directly I have used the tally to prepare that, and all the bills will automatically uploaded. You can go through there. Now I am just Mohit, simply if I matlab, whatever you have shown right now, yes, if I just summarize it, yes, so in three simple step, I can prepare the returns. yes, I just need to go to GSTR1 report in TallyPrime. yes, The sir. second hand, I just look into the uncertain transactions. Uncertain And the transaction. second step, I just need to export the data. Export the data Export the data into JSON. JSON. Then in the third step, I just need to upload that upload that data into the online and submit it for submit it. Then this simple things. Prepare the offline and then upload the JSON file on that tab, and the data will automatically get auto-populated over. Yes, yes. Mohit, I also heard from many customers in that sense, and that consultant also. Yes. Whenever we go for a GST return file, so the best practice is to validate the GSTN or HSN details also, so that whenever there is error in the HSN or GSTN, the online portal throw an error saying that yes, there sir. is an error in the HSN Yes, and the GSTN. For that, it doesn't show where is the error. So we check it in the application की बस इसमें किस में error है, किस HSN में error है या किस GSTN में error है. So TallyPrime has a wonderful features to validate that, I think. Yes, so can you just show us कि वो उसको हम कैसे कर सकते हैं? I think GST report के अंदर ही है जो validate एक साथ हो जाता है. Yes, yes, sir, yes, sir. है तो मैं एक बार आपको शो करता हूँ. Yes. I'm showing the tally screen. Yes. Update party GST, and in a single go we can validate all the GSTIN, right? And also we can validate the GSTIN while creating the ledger, or in the alteration screen also we can validate it. So here is the yes. यहाँ पे हम show कर सकते हैं all GST and UIN, but I have not upload नहीं किया user ID password. Yes, login ID password is required. There is login ID password is required for validating the Is anybody is having a eBay bill API login or e-invoicing login API login, that person can easily validate it, and through TallyPrime you can generate you can directly generate e-invoicing and eBay bill as well. For that, you just need to visit the GSTN portal, and in your registration section, after login into the eBay bill or e-invoicing page, in the left hand side, you will see a API registration. In the API registration, you just need to register there, and you will have a API login. So you can just simply log in, use that login credential to
create e-way bill, e-invoicing directly through TallyPrime, and in the similar way, you can also validate the HSN in GSTN, the way CA Mohit Garg has just shown us. In the update party section, you can update, you can validate all the GSTN, and all the GST will be shown. And in the GST rate setup, we can validate the HSNs, all the HSN and Yes, sir. SSC. Yes. Thank you, Mohit. Please proceed. Next, for the, if any query from the side of GSTR1 for online preparation, if any participants is over here, so they can ask, and then I will move for a next. Mohit, what we will do is I would request you to just cover the entire topic. Yes, sir. I will unmute the participants. They can ask questions. Yes. After completing the agenda. Yes. Sir, how much time we are having? Because you can how much time it will take for that? If I will take the part of the 3B, then थोड़ा समय लग जाएगा. Try to finish it within 15 minutes. 15 minutes. I am moving for a reconciliation part, which is most crucial for us, so that afterwards, if we are having the sufficient time for us, then I will move for a 3B also. Then ये best रहेगा ना sir? First of all, I will cover the GSTR2 reconciliation. Reconciliation is the most important for us. So, most of the chartered accountant have shortage of the time at their offices, so that they can reconcile our GSTR2 so that I am taking over there. ना पहले 2A ले लेते हैं, इसके बाद हम मूव कर लेंगे कि 3B के लिए अगर आपका समय होगा तो हम मूव. ठीक है, ठीक है. Next, I am moving for a GSTR2 reconciliation, which is most important for all of us. कि हमारे को 2 reconciliation कैसे करना है, और पोर्टल पे everything is available at portal, and we are having तो tremendous facility in the TallyPrime also, कि हम उससे directly क्या कर सकते हैं, reconcile कर सकते हैं, और the report will automatically generated by the Tally itself. कि कौन से mismatch हैं, कितने invoices हमने feed कर दिए, कितने invoices हमारे डलने से रह गए, क्या कौन से invoices का कई, because we have to take some of the invoices credit को हमारे को क्या करना है, disallowed भी करना है, because of some of the item which for those the credit is not allowed by the but हमारे को क्या करना होगा, किस तरीके से करेंगे. First of all, I am taking to the portal side, then I will move over here. पोर्टल ले रहा हूँ मैं. Here I am at portal, और पोर्टल पे देखिए reconciliations के लिए बात करते हैं. We are having reports from Tally, the GSTR2. It can be view or it can be download. Because we have to reconcile the details, then we will go to the download portion also. We can also view भी कर सकते हैं कि हमारे कौन से B2B invoices हैं, वो हमारे को यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कौन कौन से पार्टीज हैं जिसका हमारे पास में हमारे को अपनी पोर्टल पे हमारे टैली में एंटर है या नहीं, उनको चेक करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको डाउनलोड कर, I will come to the second quarter and September details and GSTR2A and download. If we want to download, it can be downloaded in the Excel and JSON. JSON will directly imported to the TallyPrime, and it will get reconciled within a few of the seconds. और एक्सेल डेटा भी हम यूज कर सकते हैं. एक्सेल डेटा हम मैनुअल रिकंसिलिएशन के लिए यूज करते हैं. पाइवेट लगा के हम उसे रिकंसाइल कर सकते हैं कि एक्सेल परचेज फाइल्स की एक्सेल को हम डाउनलोड करें फ्रॉम टैली, एंड दिस एक्सेल को हम पाइवेट लगाएं और मैनुअली भी रिकंसाइल कर सकते हैं. बट मैनुअल रिकंसिलिएशन विल टेक मच टाइम देन TallyPrime से रिकंसिलिएशन. TallyPrime का रिकंसिलिएशन काफी इजी है, और उसके लिए हम क्या करें, JSON फाइल डाउनलोड करें. आप मैनुअल रिकंसिलिएशन के लिए एक्सेल डाउनलोड करेंगे. इफ वी वांट टू
auto reconciliation from Tally itself, then we will download JSON file. I will click over here, और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, दिस रिपोर्ट इज विल बी अवेलेबल विद इन 20 मिनट्स में आती है, बट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दैट फाइल अर्लियर, सो दैट इट विल बी अवेलेबल जस्ट नाउ. मेरे को ये अभी अवेलेबल है और ये मैंने फाइल डाउनलोड कर भी डाउनलोड हो रही है. This file get down. मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं अपने टैली में इसको ड्राइव में सेव कर लेता हूँ. I am going to sharing the screen. Here is the file जो मैंने पोर्टल से डाउनलोड करी है. इस पोर्टल की फाइल को मेरे को क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना. ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये जो फाइल आती है दैट वी कॉल JSON फाइल. ये मेरी अंदर JSON फाइल आप देख सकते हैं, ये JSON फाइल है. ओनली आई हैव टू गो टू द टैली. अब मैं इस फाइल को टैली में इंपोर्ट कर, और रिकंसिलिएशन विद इन अ सेकेंड आपके सामने आ जाए. और फिर मैं इसके बाद में आपको करेक्शंस बताऊंगा कि आप करेक्शंस कैसे करेंगे वन बाय वन. स्टॉप शेयर, आई एम टेकिंग द टैली. टैली की स्क्रीन विजिबल हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द GSTR2, एंड GSTR2 पे मेरे को क्लिक करना है. इट इज showing the detail. Here is that. There are some invoice which are needed, correction needed are four invoices जिसमें मेरे को correction करना है. ये भी मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या क्या वो है. एक का कुछ आइटम है जिसपे HSN कोड फीडेड नहीं है, तो आपको HSN आइटम भी आपको इसमें HSN कोड भी फिल करना होगा. ये टैली ने ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिए ये एरर, जो कि हमने परचेज चढ़ाई और परचेज में ये एरर टैली परचेज शो करके दे रहे हैं. अभी ये एरर, बाकी की एरर अभी जो हमारी टैली पोर्टल पे है वो भी मेरे को शो करेगा. देखिए ये जो रिपोर्ट यहाँ पे जो नीचे टैब शो कर रहे हैं, दीज ऑल आर ब्लैक इन कलर. बट अब मेरे को क्या करना है, इस रिपोर्ट को इंपोर्ट करना है इसके अंदर अपनी TallyPrime फ्रॉम पोर्टल. पोर्टल की रिपोर्ट को लोड GSN पे जाना है, पाथ को स्पेसिफाई करना है, और मैं पाथ को कॉपी कर लेता हूँ. और ये पूरी रिपोर्ट जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी वो सारी इंपोर्ट होके इसमें. और जो पोर्टल का डेटा है दैट इज ब्लू इन कलर. ये जो ब्लू कलर का डेटा है दैट इज पोर्टल डेटा. आप देखें अगर लिख के भी आ रहा है डैश पोर्टल 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 पोर्टल, ये सारा डेटा पोर्टल का है. और आपको देखिए कुछ मिसमैच भी नजर आ रहे होंगे. अगर आप देखें तो 46 इनवॉइसेस पोर्टल पे हैं और टैली में 66 इनवॉइसेस हैं. इट मींस वी हैव फीडेड मोर इनवॉइसेस. ज्यादा इनवॉइसेस हमने फीड कर लिए हैं देन जो हमारे पोर्टल पे शो कर. 14 इनवॉइसेस हमारे 14 हमारे क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स हैं, जबकि हमने एज पर बुक्स केवल 5 डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स ही एंटर किए. तो ये मेरे को इनवॉइस वो शो कर रहा है. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है सेव रिटर्न. इधर आपको शो आ रहा होगा सेव रिटर्न का. आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि आपको कोई इनवॉइस मिसिंग है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं. सेविंग इन प्रोसेस, जो भी आपके सारे रिटर्न्स आपको
शो करेगा कि आपका ये रिटर्न मैंने सेव करके रख लिया। आफ्टरवर्ड्स कोई भी चीज आप चेंज करना चाहे कर सकते हो। ये मैंने बैकअप सेव करके रख दिया इसका जेएसएन फाइल का। ये मेरे को करेक्शन शो कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स बेसिस ऑफ वैल्यू चेंज व्यू एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। इसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट कोई नहीं शो कर रहा। इसके बाद में स्टेटस कोई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको मैच करके स्टेटस बता रहा है। देखिए अवेलेबल ओनली इन बुक्स, ऐसे 28 इनवॉइसेज हैं, 28 इनवॉइसेज हैं जो कि क्या है, केवल बुक्स में अवेलेबल है और पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। 64 इनवॉइसेज स्टेटस अपडेटेड, अपडेटेड कितना, 64 इनवॉइसेज न्यू, ये मेरे नए इनवॉइसेज है जो कि मेरे को पोर्टल पे दिख रहे हैं पर मेरी टैली में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक व्यू में, एक सिंपली व्यू में मेरे को टैली ये जनरेट करके दे रहा है कि आपको टू वे का रिकंसिलेशन करना कितना आसान है। जितना आप एक्सेल में पहले डेटा लें फिर टैली से पाइवेट के थ्रू आप चेक कर सकते हो, दैट विल टेक मच टाइम। बट यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके आपको पूरा डेटा टैली में प्रोवाइड किया। ये आपके लिए एक ऑप्शन है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, आपको कोई करेक्शन नीड करना है तो करेक्शन। ये आपका पूरा रिटर्न व्यू है, ठीक है। ये आपका रिटर्न व्यू आ गया जो टू वे का रिटर्न व्यू है, ये रिटर्न व्यू हो गया। देन इट विल बी टू रिकंसिलेशन। मेरे हिसाब से अंकित जी, अगर मैं टू पे ही ओवर करूं सेशन को तो इफ क्या कह रहे हैं मोहित जी? सर मैं ये कह रहा था कि अपने सेशन को 2.1 में कवर कर चुका हूँ, 2 में मैं रिकंसिलेशन पार्ट में कवर कर चुका हूँ। अगर 3 भी लेने का, क्योंकि टाइम का कांस्टेंट भी रहेगा तो कैन यू जस्ट ओवरव्यू थोड़ा दे दीजिए 3B का? वी हैव 3B का ओवरव्यू दे दो। डन डन डन। फर्स्ट ऑफ ऑल 3B इज नॉट द रिटर्न, मतलब कई काफी सारा मिथ है कि इट इज रिटर्न। नो, इट इज नॉट अ रिटर्न, इट इज ओनली द चालान। ये चालान है जिसके थ्रू हमारे को टैक्स पे करना होता है टू दी जीएसटी डिपार्टमेंट। द रीजन हमको पता है कि 3B क्यों आया। 3B इज द प्लान बी ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। प्लान बी था अर्लियर, दैट रिटर्न वाज हर शेयर फोन आ रहा है जरा ले। तो it is the plan B of GST department because the portal was not ready at that time। जब GST आया तो जब से ये रिटर्न चल रहा है और नाम 3B ही हो गया, तो वो 3B फॉलो कर रहे हैं और 3B पे मैं मूव कर रहा हूँ। तो 3B का पहले मैं फॉर्मेट आपको शेयर कर रहा हूँ कि 3B का फॉर्मेट कैसा है। और 3B इज नॉट द रिटर्न, इट इज द चालान। ये हमारा चालान है जिसमें हमारे को क्या करना होता है, डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन इस चीज की भेजनी होती है कि मेरे को कितना अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करना। इट इज द फॉर्मेट ऑफ 3B। आपको विजिबल नहीं है, विजिबल है ये 3B का फॉर्मेट? यस 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 सर। तो 3B में टोटल जो कॉलम है, मतलब बड़ा आसान से मैं, मतलब क्योंकि मैं कोचिंग में भी कई बार स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ तो थोड़ा टेक्निकल ना हो तो बड़ा आसानी से समझिएगा। 3B में टोटल करके 6 कॉलम, ओनली 6 कॉलम इज देयर। 2 is for sales, 2 is for purchase and 2 is for taxes। डिपार्टमेंट को सेल्स की डिटेल, परचेज की डिटेल और टैक्स की डिटेल, 3 चीज की डिटेल भेजनी होती है। जो हमारी सेल्स की डिटेल है ये डिटेल नहीं है, ये समरी है। इसको एक नाम और भी कहते हैं, इसे समरी रिटर्न भी बोलते हैं। इट इज द समरी। जैसे हमारी किताब के आगे उस चैप्टर की समरी मेंशन होती है, सेम दिस इज ओनली द समरी रिटर्न। इसके अंदर इनवॉइस वाइज कोई डिटेल नहीं जाती किसी भी तरीके, ओनली द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, total amount of purchase, total amount of tax which we need to deposit to the department, it will go only this return। तो हम इसे ये कवर करें। अगर मैं देखूं तो देखिएगा ऊपर रिटर्न में 3.1 एंड 3.2 ये दो कॉलम्स आपको नजर आ रहे होंगे, दो टैब्स नजर आ रहे होंगे, 3.1 एंड 3.2।
इट इज फॉर सेल्स पार्ट। ये किसके लिए है? सेल्स, मतलब आउटवर्ड सप्लाई भी बोलते हैं सेल्स। ये भी क्या है? सप्लाईज, मतलब सेल्स। ये भी सेल्स के लिए है और ये भी सेल्स के लिए। नेक्स्ट इज टू फॉर परचेज। देखिए आईटीसी किस पे मिलेगी? इनपुट टैक्स का क्रेडिट किस पे मिलेगा? परचेज पर। और देखिए ये भी क्या है? परचेज। एंड इसके बाद में दो कॉलम में क्या मांगा गया? टैक्स और टैक्स। टोटल हमारा जो रिटर्न के कॉलम कितने थे? 6, जिसमें 2 सेल्स के, 2 परचेज के और 2 टैक्स। ठीक है, क्योंकि परचेज की डिटेल नॉर्मली हमको फिल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके, क्योंकि एक डीलर की परचेज दूसरे व्यापारी की सेल। अगर मैं सेल करता हूं तो अगला दूसरा व्यापारी उसको परचेज करता है। तो इफ आई फाइल द GSTR1, देन इट दिस डिटेल विल ऑटोमेटिकली शो ऑन द पोर्टल ऑफ बायर। बायर की पोर्टल पर ऑटोमेटिकली शो करेगा, so that we have not required to file 2 GSTR2 फाइल नहीं करना, बट वो डिटेल ऑटोमेटिकली मेरे को ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे आ जाए। रिकंसिलेशन करना है पर फाइल नहीं, रिकंसिलेशन करेंगे और हम अपने डीलर को टोक भी सकते हैं कि हमारा ये इनवॉइसेस शो नहीं कर। आफ्टरवर्ड्स नेट डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड परचेज विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स। जो हमारे सेल्स पे टैक्स बना और जो हमारा परचेज पे टैक्स बना, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा टैक्स अमाउंट हो जाएगा। मैं आई एम मूविंग फॉर अ टैली। ये मैंने आपको रिटर्न का फॉर्मेट बताया है, जैसे मैंने आपको GSTR में किया था। आई एम मूविंग फॉर अ टैली पार्ट। टैली में भी देखिएगा, अगर मैं टैली में आता हूँ, देखिएगा these 2 columns for sales, these 2 column for purchase, एंड इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है? टैक्स। इसके बाद में जो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि नेट एंट्री जो होगी वो पेमेंट की होगी। तो यहाँ पे हमारे को जो शो कर रहे हैं, देखिए 2 कॉलम सेल्स के, 2 कॉलम परचेज के और 1 कॉलम हमारा टैक्स का शो कर रहा है। और फाइनली हम बैंक के थ्रू जो पेमेंट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो टैली के अंदर, बट वो हम स्टेट एडजस्टमेंट के थ्रू जब हम पेमेंट में जाएंगे वाउचर एंट्री के थ्रू, तब वो पेमेंट होगा, तब वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखिएगा यहाँ पे सेल्स की डिटेल अपने आप टैली जनरेट करता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सारे इनवॉइसेस और टोटली फीडेड है तो देखिए ये सारे इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करते हैं। और आपको ये बनाने के बाद में जब आपने डिटेल पूरी बना ली, ये यहाँ पे आ गया। आफ्टरवर्ड्स हमारी कोई भी 0 रेटेड सेल नहीं है, इसलिए इस डेटा में शो नहीं कर रहा। कोई भी हमारा निल रेटेड एग्जेम्प्टेड कोई भी हमारे आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। फिर इसके बाद में आईटीसी की बात आती है, मतलब मैंने कोई ऐसी परचेज करी है जिसको मेरे को आईटीसी का क्रेडिट लेना है, तो ये मेरा आईटीसी शो कर रहा है। टोटल करके 77,977 का ये आईटीसी है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। जो मेरे करेक्शन है वो 0 है, कोई करेक्शन नहीं करना। देन आई विल एक्सपोर्ट दैट फाइल, जैसे मैंने GSTR1 में किया था सेम GSTR3B में भी ये फाइल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। डायरेक्टली JSON फाइल एक्सपोर्ट हो सकती है और ये फाइल ऑटोमेटिकली मेरी इंपोर्ट हो जाएगी, सेम जैसे मैंने GSTR1 के केस में किया था। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने JSON फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर दी और ये मेरी चली गई एक्सपोर्ट होकर, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर। आफ्टरवर्ड्स मैं stop and then I'm moving for a portal। पोर्टल पे आते हैं।
सर पोर्टल विजिबल है में? Yes, yes, Mohit. यस। तो 3V के लिए मंथली रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न जरूर मेंशन है, इट इज द चालान जहाँ पे हमको रिटर्न फाइल करना होता है, 3V फाइल करना होता है। जीएसएन फाइल को बस डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ऑप्शन है। तो ऑफलाइन पे क्लिक किया, देन जैसे GSTR1 में हमने फाइल अपलोड करनी थी, सेम फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना है, वो भी हमें को फाइल सेलेक्ट करनी है और ओपन करके इसको सेलेक्ट करना है और ये फाइल हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी फाइल सेलेक्ट नहीं करी है तो ये नहीं आया, और जैसे हम इसे अपलोड करेंगे वो डेटा हमारे का अंदर शो करने लग जाएगा। हम इसमें ऑनलाइन में भी देख सकते हैं ये। दिस इज 2 फॉर सेल्स, दो दो हमारे सेल्स के, दो परचेज के और दो टैक्स। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको मेरे को फिल करना होता है और मेरा रिटर्न मतलब टैक्स जमा होता है। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इज 20, तो इसको फिल करना होता है। ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट करता है फ्रॉम GSTR1, जो हमारा GSTR1 फाइल होगा उसके थ्रू ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट करेगा। जो हमारा ITC आएगा, जो IT इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट आएगा, वो डायरेक्टली 2 से GSTR2 से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, हमारे को फाइल नहीं करना पड़ता। और आफ्टरवर्ड नेट अमाउंट हमारे को जो इंटरेस्ट और टैक्स जमा करना होता है वो, और टाइम हमारा सेव होता है ऑटोमेटिकली टैली से। अगर हम इसको यूज करके कर रहे हैं तो काफी चीजें हमारी सेव हो रही है। मैं एक बार टैली प्राइम पे भी जाता हूँ, तो टैली में हमारे को सिंपली GSTR3B भी फाइल करने के लिए सेम जैसे GSTR1 में करना होता है, सेम फॉर्मेट हमारे को 3B। That's all for my presentation. If any participants have any query from their side, they can also discuss. That's all, sir. अंकित जी, मेरी तरफ से Yes, सेशन yes, कंप्लीट। yes. Thank you, Mohit ji. Thank you for the nice session. I think it was a detailed session, in fact, I can say. And the way you have shown the GST return filing and GSTR2 reconciliation and the 3B, it is really simple and understood for me. I generally never file return, so I can clearly understand the steps which you have clarified, and thank you for that. And so I will just open for the Q&A. Before that, I just want to highlight one thing for all the participants, all our chartered accountants. So if anybody wants to use Tally anywhere, any kind of concept through any kind of anywhere concept, so we have now have a tie-up with Amazon. So you can simply put your Tally, you can transfer, you can shift your local area network TallyPrime like application to Amazon web server. We have a collaboration with Amazon, and the way secure your data on your computer, the same thing you can find it on AWS. We have kept everything in a secure platform. We are providing only dedicated virtual machine in this solution. We have used Linux operating system. There are two-way authentication, and all the data in transit at rest, that is also encrypted. And we have used dynamic IP also. There are a lot of things we have ensured that currently there are many cloud options are there in the market, but you need to go to the right solution. I'm just wanted to highlight it, and you don't need to go to any other vendor to use this solution. Just reach out to your preferred certified Tally partner. Just ask them for the TallyPrime on AWS solution, so they will show you the demo. And as per your usage, we can suggest you a appropriate virtual machine. So this virtual machine you can use anytime, anywhere. If you have multiple branches, you want to centralize your data, and you want to use anytime, anywhere. So the TallyPrime on AWS is the right solution for your organization.
So I can just I just wanted to highlight this. So we are open for the Q&A. I would request, please raise your hand. I will unmute you so you can ask question to Mohit ji, and I will try to answer your question. So please raise your hand. I'm just going to unmute you. You can ask your question. So Arun Goyal ji is there. I'm just unmuting you, Arun ji. So if you have any question, please unmute yourself and ask questions, sir. First question है, reconciliation can be done from 2B. Reconciliation मोहित जी 2B से हो जाएगा, तो वे have shown. सर देखिए, रिकंसिलेशन के लिए 2B एक हमारी रिपोर्ट है जो कि हम डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे ये रिकंसिलेशन में कहीं कहीं डिफरेंसेस है। 2A इज द फाइल दैट वी गेट फ्रॉम द पोर्टल, जो कि हमारी जो फाइल है वहां से पोर्टल पे आती है, और हम उसको क्या करते हैं, टैली में इंपोर्ट करते हैं, कंपैरिजन बना सकते हैं। दूसरा 2B में हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल है और जो हम डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमारी ये इनवॉइसेस में कुछ डिफरेंसेस है, तो वो हम 2B के थ्रू। ठीक है, एक क्वेश्चन और है B2C से रिलेटेड. B2C consumer is an unregistered person and it is not eligible to take ITC. करेक्ट है बिल्कुल. B2C अगर है तो he is not, अगर हम the person is not having a GST IN, so it means that the person is not going to take the ITC. Yes. So sir, B2C only one invoice or as a whole? क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है. राकेश जी अगर आप हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं, सो आप अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. B2C only इनवॉइस और एज ए होल? B2C को तो इनवॉइस को तो ही अपलोड करना पड़ेगा, एंटायर इनवॉइस को तो अपलोड करना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न में, जीएसटीआर में. यस, वो तो ऑब्वियस है. अगर कस्टमर आपने अनरजिस्टर्ड है और आपने सेल किया है तो आपको डिटेल्स भेजनी है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों नहीं. एंड एक क्वेश्चन और है, हाउ टू एंटर रिवर्स चार्ज इन इनवॉइस इन जीएसटीआर 1 और इन टैली थ्रू जेसन. रिवर्स चार्ज इनवॉइस जो है मोहित जी जीएसटीआर 1 में, उसका थोड़ा सा हाईलाइट कर देखिए, रिवर्स चार्ज जब तक शो नहीं करेगा टैली में आपका, पहली बात तो रही कि रिवर्स चार्ज को आपको पोर्टल पे शो करना है, तो आपको टैली में एंट्री रिवर्स चार्ज की सही होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स में अगर मैं बात करूं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है रिवर्स चार्ज की एंट्री फिल करते समय. तो कई बार रहता है कि अगर आपने प्रॉपरली उस एंट्री को अकाउंट फॉर किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली टैली उसको आपकी पोर्टल पे शो करेगा. प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हम रिवर्स चार्ज की एंट्री करते हैं तो हम जर्नल के थ्रू करते हैं, बट स्टेट एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना भूल जाते हैं. उसके लिए आपको जब भी एंट्री करें जर्नल के थ्रू करते समय आप स्टेट एडजस्टमेंट को जरूर सेलेक्ट करें कि रिवर्स चार्ज क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, किस रीजन से एप्लीकेबल हो रहा है. देन विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दी जीएसटी रिटर्न. अदरवाइज अगर आपने उसको स्टेट एडजस्टमेंट नहीं लिया हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आपको रिटर्न्स में शो नहीं. तो ये आपका डायरेक्टली वही जब भी होगा. मैं अगर आपको दिखाऊं, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, टैली ओपन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा. जब भी रिवर्स चार्ज का आपको हाँ जी, मैं पोर्टल इस पर टैली पे ले रहा हूँ. तो आप जब भी करें वाउचर के थ्रू रिवर्स चार्ज जिस आइटम पे एप्लीकेबल है, तो आप सब ध्यान जरूर रखें कि वाउचर एंट्री जब भी आप करें, जैसे फॉर एग्जांपल वाउचर है आपका और जर्नल, तो आप यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ पे साइड में आ रहा है ऑल्ट जे. नॉर्मली अकाउंटेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री करते, दे फॉरगेट टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन. अगर आपने स्टेट एडजस्टमेंट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो टैली के रिटर्न्स में आपको रिवर्स चार्ज की एंट्री शो नहीं करेगी. आपको यहाँ पे जरूर सेलेक्ट करना है कि भैया आपका क्या है, रिवर्स चार्ज है, क्यों जमा करना है,
टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज किस लेवल इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जो आपको जैसा भी करना है यहाँ पे रिवर्सल ऑफ टैक्स लायबिलिटी या जो भी आपका रिवर्स चार्ज है, आपको उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। जो एडजस्टमेंट आपको जरूर क्लिक करना है। नॉर्मली डायरेक्ट एंट्री करने के बाद में आपको टैली की पोर्टल पे शो नहीं करेगा, आपको स्टेट एडजस्टमेंट पर जरूर जाना है रिवर्स चार्ज, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और है मोहित जी। जी जस्ट एक क्वेश्चन है कि द वे you have shown the you have shown the import of 2A JSON. Can we do the same way GST 2B JSON import and reconciliation? It's not currently, it's not available, I think. करंटली नॉट अवेलेबल बिकॉज 2B में ना वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है, और वो फिर वो उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में उसको लिए चाहिए होती है, तो माइट बी नॉट अवेलेबल फॉर दैट। आपको उसके लिए एक्सेल फाइल डाउनलोड करके उसमें ही जाना पड़ेगा, पाइवेट के थ्रू करना पड़ेगा। Yes. Sir, can we import GSTR 2B to Tally? वो भी डिस्कशन कर सकते हैं। 2A है, 2B 2 है, 2B is not there, not. so it is currently not available. Any other query from? So we will wait for another 2 minutes. If any question is there, I would request to put over the chat or raise your hand. I will unmute you and you can ask a question directly to Mohit. Otherwise, we will wind up the session. And still, if you have any queries related to any features, you can go to Tally Help also. When you open TallyPrime, in the right hand side section, you will find a option called Tally Help, and Tally Help is very unique, and that has been enhanced. So you just type your question. You can find the answer in text also, in screenshot also, and also we have embedded videos also. You can get the information from there also. Otherwise, you can reach out to our Tally certified partners, or you can reach out to our Tally support. So we are there to have support you for any kind of usage, product usage, or anything you want to explore. Just simply go visit the Tally Help and website also. Yes. So Mohit, we are not getting any questions, and also we don't have any raised hand. So I would request Mohit, thank you very much for taking out time and sharing our knowledge. So I would also, in future, I would also need your help, the same support and time to share some other unique features that can help our chartered accountants and customers. So with this, I would just say big thank you to you, and keep doing this kind of sessions. Thank you. And I would like to thank you all the participants for joining and taking out time to just attend this session. And we continue this kind of session, and we have been doing this session every Wednesday 3 to 4:30. So whenever any registration link comes to you, just simply register there and try to log into this kind of sessions. And e-invoicing is very much possible through TallyPrime. It's very simple. eBay bill and e-invoicing, everything is getting managed through TallyPrime in a very simple way. So user no need to go to offline portal to do the repetition kind of work. So we have simplified GST in Tally. So the similar fashion, GST invoicing is a big change
which is going to happen for the smaller scale of customer. So I would request, please educate your customers or connected customer to use TallyPrime and use e-invoicing and e-way bill from TallyPrime itself. So with this, we are closing this session. Thank you everyone for joining in, and thank you Mohit ji for sharing your knowledge and input. Thank you everyone. We are winding up this session.